Welcome back here with us on Urban Debate on Mirror Now. The focus now is going to be on COVID warriors, the medical students who are protesting in different parts of the country. And this is against the NEET exam that is supposed to happen on 21st of this month. Now, the exams are supposed to happen on 21st of May. However, there is an issue here, as the students have pointed out. They say that the dates are clashing with NEET PG 2021 counselling dates. There's very little time for them to really prepare for this exam. Students have now approached the centre, as well as they have asked Supreme Court to intervene into this particular matter. Top court of the country has agreed to hear the plea but has not listed the matter so far. Just few days are left, and the COVID warriors, these medical students, are now quite tensed. Let's first take a look at this report sent to us by my colleague Ela. Only few days are left for NEET exams 2022. While NEET aspirants are preparing for NEET exams, they have just gone through the NEET PG counselling, and they say they have 19 subjects and only 12 days to prepare, which is not enough, and that's why they demand to defer it for around 10 days. And we have some aspirants here. We will talk about the issue they are facing and what their query is. Sir, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर संजीव नाम है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि पोस्टपोन होना चाहिए एग्ज़ाम? असल में देखो, उसका कई रीज़न है। हम लोग जान रहे हैं कि हमारा पूरा देश कोविड की समस्या से जूझा है। उसकी वजह से पिछला एग्ज़ाम भी हमारा डिले हुआ था। उसके बाद जब काउंसलिंग 16 जनवरी से स्टार्ट हुई, उसके बाद राउंड जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया था, जो मेडिकल काउंसिल कमेटी है उसकी तरफ से, बट उसको फॉलो नहीं हुआ, वो डिले होता गया, फर्दर डिले होता गया। उसकी वजह उसका कई रीज़न रहे। ओबीसी रिजर्वेशन रहा, कई बच्चों का उसका जो इंटर्नशिप कंप्लीसन का था उसका डिले हो गया था। उनकी वजह से कई रीज़न रहे, उनकी वजह से डिले होता रहा। अब हमारी अभी भी काउंसलिंग चल रही है। 7 को हम लोग काउंसलिंग में, मैं खुद काउंसलिंग में बैठा था। अभी भी राजस्थान स्टेट की, महाराष्ट्र की, सीपीएस की, उनकी काउंसलिंग चल रही है। तब हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि इस साल का हम नेक्स्ट वाला एग्ज़ाम 10 दिन के बाद हम लोग एग्ज़ाम दे देंगे? अभी हमें जब टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, अभी हमारे पास इंटर्नशिप हो रहा है, चल रहा है, और हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही मोदी जी हमारी बातें सुनने से मना कर रहे हैं। मेरे को अभी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं काउंसलिंग में बैठूँ। अभी सीपीएस का मैं वेट कर रहा हूँ काउंसलिंग का। इधर कह रहे हैं एग्ज़ाम होगा 13 को, 21 को सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है 13 को। तो मतलब सब ग्रुपों को मिला के इतना मेंटल प्रेशर आ रहा है, किसी पढ़ाई हो नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। तो मेरी यही मांग है कि 2 महीने एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए और हमारी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। Lastly, we have filed a PIL ki hoping for the Supreme Court will listen the things which will be fruitful for us, and most probably because just simultaneously counselling is also going, and secondly we are not getting enough time for our preparation, and lastly, and this time we have to visit college to college in this last counselling. So these NEET aspirants have uncertainty about the future and don't know what future beholds for them. As they say, due to COVID, many things have been delayed. Many students are doing internships. Many students are going through counseling, and they don't know what the future beholds for them. But they say that it is not enough time given to them for the preparation of NEET exams, and they want to get it deferred for at least 10 to 12 weeks. With video journalist Hassan, this is Ella for Mirror Now. Joining us on the broadcast this evening is Dr Manish Prabhakar, who is National Chairman, Federation of All India Medical Association. We also have with us Dr Chinmayee Gowda, PG NEET aspirant. Good evening to both of you. Thank you for joining us here on Urban Debate on Mirror Now. Dr Manish, I want to first ask you, how many students are we talking about here who are supposed to appear for NEET PG exams on 21st of May? I believe you had some meetings with Ministry of Health, with Health Minister Mr. Mansukh Mandavia too. What happened? Your first question was on about the number of students. The number of students की जो बात है 1.9 lakhs, मतलब almost 2 lakhs बच्चे हैं जो पीजी का तैयारी कर रहे हैं, जो अभी 21st को एग्जाम लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो लास्ट ईयर का एग्जाम है नीट पीजी, जैसा कि अभी हमारे बाकी दोस्तों ने बताया कि वो काउंसलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अगला काउंसलिंग मतलब अगला एग्जाम आ चुका है, होना चाहिए।
और ये डिस्पैरिटी मतलब ये व्यवस्था का प्रॉब्लम है। आप जो बॉडी कंडक्ट करती है उसको सोचना चाहिए कि जो आप एग्जाम का जो कंडक्ट करने वाले हैं उससे पहले आपका काउंसलिंग तो कम से कम खत्म हो जाना चाहिए। इनका काउंसलिंग अभी तक खत्म हुआ नहीं, अभी भी चल रहा है कुछ स्टेट्स में। डॉक्टर संजीव अभी बता रहे थे, तो महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे कई सारे स्टेट्स हैं जिसका कुछ ही खत्म हुए, कुछ के नहीं खत्म हुए। अब यहाँ पे डिस्पैरिटी है। दूसरी बात कि जो बच्चे हैं पीजी के वो ऑलमोस्ट 2 लाख है। जो पीजी के सीट्स है वो अराउंड 38,000 है। उसमें हाफ ऑफ द सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज के, हाफ ऑफ द सीट्स प्राइवेट्स में। उसमें भी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल बटेंगे तो और आधे हो जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये एग्जाम इतना आसान नहीं है। मतलब मतलब अपन सिचुएशन जो है, जो एग्जाम कंडक्ट, इसका जो एग्जाम है वो बहुत ही टफ है एंड इतना आसान भी नहीं कि आप क्रैक करें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 2 है। एक तो आपका एग्जाम का डेट और काउंसलिंग का डेट आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम के डेट के बाद भी काउंसलिंग है। बच्चों में फियर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, होगा भी, क्योंकि जो बच्चे अभी काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं उनको एग्जाम भी लिखना है। उनको ये पता नहीं कि रिवीजन करने के लिए टाइम भी होता है। और इसमें सब्जेक्ट्स 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरफ सोच नहीं सकते कि आप 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह पढ़ के आप एग्जाम दे देंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें टेंशन, एंग्जाइटी तो होगा ही। तो और ये जो कहते हैं ना कि मतलब बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है, द वे द एग्जाम कंडक्टेड एंड द वे द काउंसलिंग कंडक्टेड, एग्जाम का डेट एंड ऑल। सो ग्रॉस डिस्पैरिटी है। अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हम अगले 10 साल में 1 लाख डॉक्टर बनाएंगे, हर साल नए डॉक्टर 1 लाख बनाएंगे। अब डॉक्टर बनाइए 1 लाख, पीजी का सीट्स भी बढ़ाइए। और ये जो डिस्पैरिटी है, आप यूजी पीजी सीट्स को इक्वल कर दीजिए, ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आप बताते हैं कि रूरल डॉक्टर जाते नहीं है, तो ये समस्या है। हम लोगों को लगा कि इनका प्रॉब्लम जेन्युइन है, क्योंकि हम लोग खुद इस स्ट्रेस से निकल के आए हैं, तो हमें पता है स्ट्रेस होता है और इनका कारण भी जेन्युइन है। इसके लिए हम लोग मिनिस्ट्री से बात करने गए जी। तो मिनिस्ट्री से अब ऐसा कोई अभी तक कोई फॉर्म डिसीजन जो होता है ना, कोई एक आंसर कि हाँ भाई हम करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। उनका वो सुनते हैं। हम लोगों ने पोल भी कराया था ऑनलाइन, ऑलमोस्ट 1.25 lakhs बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें 85% बच्चों ने बताया कि नहीं, एग्जाम जो है फाइमा ने कंडक्ट किया था, तो उसमें बताया कि एग्जाम जो है पोस्टपोन होना चाहिए, आइडियली होना भी चाहिए। अभी आप 6 से 8 वीक कम से कम आप इस एग्जाम को पोस्टपोन करिए, यही हमारा मांग था सरकार से, जो हमारे डेलीगेशंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, उन्होंने बताया। और कल हम लोग फिर जाने वाले हैं, देखते हैं कल क्या होता है। Okay, so you're telling us that you want the exam to be postponed by at least 6 to 8 weeks, but so far, no assurance really has come from Ministry of Health in this regard. Dr. Chinmayee Gowda, you are, a medical student as well, NEET PG aspirant. Can you tell us a little bit about why you think this exam should be postponed? Because some students also want the exam to happen on 21st of May as it is scheduled. Thank you, Heena. I would like to tell you from the first what happened since last year. Our exam was supposed to happen in January last year, but it got postponed to September due to COVID, which was not our mistake. Then counselling was supposed to happen from October and was supposed to end by December, but again it got postponed due to cases, which was again not our mistake. And now the previous year counselling is getting over. It recently got over on May 9th, and still state counselling is pending, and CPS counselling is pending, which is getting over on May 20th. So as far as my knowledge, there is no human cloning which is invented yet. We can't be present in the exam center and we can't be present at the counselling at the same time. So we are the same students who had appeared for the exam last year, but because we were all mid-rankers, we didn't get seat previous year, but still we are hoping for it, that we might get seat in the stray vacancy round and the mop-up round. We are the same students who will be appearing next year also. So how can they expect us to be there and be here also? And between the stray vacancy and the exam, in some states where counselling is over, there is very little gap of 7 days or 8 days, and we have 19 subjects. How can we revise everything in that such short span? Because anywhere in all these things, it was never our mistake.
and we have tried to reach everyone regarding this. There is no door that we have not knocked till now. We have tried to reach health minister, we have tried to reach prime minister, we have tried to reach president also. We had written to them that if exam is happening on 21st, we will be left with no choice but to surrender our degrees. Still, there has been no reply. No one wants to encourage us. We are just like an unwanted guest in everyone's gate. So this is a situation. It is just, and the counselling was delayed all these days because 7 times they have changed the schedule of counselling, and it shows how inefficient the policy makers are. Because of their mistake, it's us who are suffering, and we are the same people who served the country during pandemic last year, and now no one wants to listen us. We lined up to serve the country when prime minister called us, but now everyone is deaf for our cries and everything. Okay. Dr. Manish, now what next? What is it that you are now planning to do? Because just 10 days are left for the exam to begin. I believe Supreme Court has agreed to hear your plea, but we still do not know about the date. What next? जो हमारा है एक तो सुप्रीम कोर्ट का है 13 मई को उसका सुनवाई है। बाकी जो प्रोटेस्ट हमारे पैन इंडिया अलग अलग हिस्से में कल भी है, चलते रहेंगे। नोटिफिकेशन एनबी ने निकाल दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना काम जारी रखे हुए हैं। कल हमारा डेलीगेशन फिर से मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में जाएंगे मिलने के लिए, देखते हैं कल क्या होता है। जी, और आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या कहना चाहते हैं? आप हमें बताइए कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम्स देने वाले हैं इस साल, उन्होंने आपको क्या कहा है? क्या उन लोगों की परेशानियां हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? मैक्सिमम मतलब जितने भी कॉल आते हैं और मतलब डे नाइट जब भी कॉल आते हैं, बच्चे परेशान है इसलिए कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। एग्जाम का स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी है। सबका इच्छा है, सब चाहते हैं कि एग्जाम का डेट पोस्टपोन्ड हो, क्योंकि उसको रिवीजन का टाइम मिल जाए। या तो आपने काउंसलिंग पहले कराना था, आपने काउंसलिंग पहले जिस कारण से भी नहीं कराया, अब तक चल रहा है, तो अगर अब तक चल रहा है तो आपको डेट एक्सटेंड करना चाहिए। बच्चों का डिमांड है, और पैन इंडिया मतलब हर स्टेट से बच्चे यही बताते हैं कि अब कम से कम 6 to 8 वीक आप एक्सटेंड कराओ। Okay, Dr. Chinmayee Gowda, any sort of an assurance you have got from Ministry of Health, from the government, that they'll at least look into this matter, or you feel that only Supreme Court's intervention can really help you all? Ma'am, whenever we tried to contact them, they have always given us the assurance that we'll certainly look into the matter. But it's already been 1.5 months since we started asking for it, since we started protesting. But still now we didn't get any official notice that exam will be postponed. Instead, we are getting notices from the exam body that exam will be conducted on the same date. And now it's been very less time. We just have 9 days left in our hands, and still now we just got false assurance, but nothing else, ma'am. And this is mentally draining us so much. Dr. Chinmayee, we don't know if we have to prepare for exam or if we have to still keep on fighting. We don't know anything. Okay. So we'll see what eventually happens, whether the center will listen to your plea, and what will the Supreme Court do in this particular matter. You're telling us the hearing is likely to happen on 13th of May. Mirror Now, of course, will be tracking the story very, very closely ahead as well. For the moment, thank you very much, Dr. Manish Prabhakar and Dr. Chinmayee Gowda, for joining us here on Urban Debate on Mirror Now this evening. With this, it's a wrap.